Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're doing good and keeping safe. Those who are new to my channel, please consider to subscribe to my channel. I post lifestyle and makeup videos every week. So I've achieved this beautiful look using only one single brand, that is Swiss Beauty. And let's start the makeup video without any further ado. Let's start. सो ये लुक अचीव करने के लिए मैं कुछ नायका से प्रोडक्ट्स मंगाई हुई थी स्विस ब्यूटी का, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दोज टुडे. दिस इज़ द स्विस ब्यूटी का मेकअप एंड प्राइमर बेस. इट गिव्स अ ड्यूवी फिनिश, ऑल्सो इट गिव्स अस वेरी स्मूथ बेस. सो ये मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एज माई प्राइमर एंड माई मेकअप बेस. सो इससे मुझे थोड़ा सा ड्यूवी फिनिश भी मिल जाएगा एंड आई विल गेट अ गुड कैनवस टू वर्क अपॉन. That's it, and this is good. Moving on to the next product, I have this concealer 06 Clair Moyen light base है, and basically मेरा eyes थोड़ा dark है, तो it is good for my eyeshadow base. I'm going to set it with a little bit of powder, and that's it. This is the Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette. It has beautiful 9 shades from neutral to dark. एक पैलेट आप कैरी करो एंड दैट्स इनफ. मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ कुछ डार्क शेड्स सो दैट यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया. काफ़ी अच्छा इसका कलर स्टोरीज़ है. आई एम यूजिंग दिस डार्क शेड टू फिल अप माई आईब्राउज. बेसिकली मैं पैलेट का कोई भी डार्क शेड लेके अपना आईब्राउ फिल करना पसंद करती हूँ. देन आई एम टेकिंग दिस रस्टिक न्यूड शेड एज बेस. उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूँगी विथ दिस लाइट शेड ऑफ ब्राउन. दिस लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जस एज यू ब्लेंड. ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. Another good thing about this palette is the pigment. I really like how it is showing up on my eyelids. मैं ये dark shade लेके इसके जो end है इसको intensify करने की कोशिश कर रही हूँ. So I'm using this beautiful pink to give me a shimmer shade. और ये मैं एक liner मंगाई हुई हूँ from Swiss Beauty, and it's really nice for its price. और इसकी प्रिसीशन इज़ रियली गुड. मुझे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुई टू ड्रॉ दिस विंग बेसिकली. सो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश और ये काफ़ी डार्क है. आप ये इंटेंसिफाई कर सकते हो एंड इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड आई एम लविंग इट फॉर इट्स प्राइस पॉइंट. And that's it for my eyes. So this is the concealer in the shade 01 Warm Nude. It acts as a little bit of color corrector kind of thing, and also it gives me a good finish under eyes and in my foreheads. मेरा थोड़ा tanning है, so it really blends well. Next I'm going to use the lighter shade of the concealer. This is 06 Clair Moyen, just to highlight and brighten my under eyes, my bridge of nose, my chin area and cupid bow. I'll quickly blend in and come back. So I'm going to use the same eyeshadow palette, the darker shade, and to tightline my lower lashes. I like to define my eyes. I'm taking the rustic nude and the pinkish shade to highlight my lower lashes. मैं highlighter ले रही हूँ, blush and highlighter palette from Swiss Beauty to define the higher point of my face. And I'm taking my rusty nude shade from Swiss Beauty. It's a beautiful shade. आप use कर सकते हो daily wear के लिए भी. And that's it. That is the final look using only one single product, that is Swiss Beauty. I really love it. Pocket friendly range में बहुत ही ज़्यादा अच्छा makeup brand है. You can try it too.